Hello everyone. सो आज हमारा काम है सिर्फ समझना। आज का काफी इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि समझना इज द मेन थिंग। सबसे पहले तो मैं देख लूं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। Why I am getting error on एक और भी आ रहा है ना, इसे कॉपी करते हैं। मैं और दिखाती हूँ, एक और पे एरर आ रहा है यहाँ पे। अब वो चैट जीपीटी बनाएगी। ठीक करो यार। अब कॉपी पेस्ट करते हैं, शुरुआत से तो नहीं कर रही मैं, यहाँ से कर रही। हो सकता है टाइप ऑफ में ही गलती।
हेलो। फिर से आवाज की, मैं क्या बोलूं, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। सो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। सर में यहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई थी, अगर नहीं सुना तो। कौन सा क्या था? हाँ, तो प्रॉब्लम आई थी, उसे फिक्स कर दिया। एक का क्लास मैंने छोड़ दिया था शायद कॉपी पेस्ट करते टाइम, या फिर उसी ने नहीं दिखाया। मैंने तो ठीक ही किया था। ओके। और यहाँ पे एसिड वाटर होना चाहिए था। अच्छा, उसने इंटरेक्टेबल वाटर लिखा था अपने स्क्रिप्ट का नाम, और मैंने एसिड वाटर, I चेंज इट टू एसिड वाटर। बस इसी में गड़बड़ी आ रही थी। अब देखो, मैं यूनिटी खुला कि नहीं। अब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने ठीक कर दिया। जो ऐसे एरर आता है ना, मेरी फटके चार हो जाती है। कितना मेहनत किया गया पहाड़ में। तो रिलोड हो रहा है, तो चलो पढ़ते हैं। एक बार देख लेती हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा है। दिस इज जस्ट टू मैनेज थिंग इन सीक्वेंस। रेंज टू get to use to get range and range get used to get range between set value of x vertex for waves. This is for width of waves, this is height for waves. Material slot, this is constant because there are two rows in y water, first top, second top. चलो अब ठीक हो गया, चल रहा है ना। चलो चल रहा है। And this is managed, this is a component which always used to make any flat image forever we want, however we want. Slot for the handle waves position, मतलब जितने भी waves होंगे उसके position को handle करने के लिए, because there will be a lot of waves, so we used to array of vector 3 to handle all top vertex mean points of waves. Here we call, एक तो गाना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये कम करते हैं। Okay. Here handle top vertex. Here we called H collider 25 waves to collide with. Here we took the component for the collider and we set that collider into trigger collider. Here we took the component of collider और ये collider so the object gets censored to collision instead of bounce. अच्छा, तो हमने true पे कर दिया इस। अच्छा, तो ट्रिगर यूज ही होता है सिर्फ ट्रिगर करने के लिए, इसमें यू नो बाउंस नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में गया तो पता लग जाएगा। और फिर ये तो बाद में करना है, ये वाला पढ़ते हैं। Here we created a mesh to use mesh and put all vertices and whatever we create with that vertex to store inside the mesh. One mesh mean one object। हाँ, तो हमने mesh क्रिएट किया ताकि जो भी हमने उसमें वर्टेक्स बनाया वो सारे इसी में सेव हो जाए, चाहे हम उसमें रेक्टेंगल बनाए, ट्राइंगल बनाए, उसमें वेव्स बनाए, सारे इसमें सेव हो जाएंगे, सारे वर्टेक्सेस एंड वर्टेक्सेस। हियर आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हाउ थिंग्स गोना बी टू टेल। और ये सब सिर्फ अभी बताया जा रहा है कि कौन सा क्या होगा, और इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये देगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, number of vertex. Here we put it all vertices position top and bottom in array of vector store and get position all vertices top and bottom to build a mesh. Okay, and here we store the top rows vertex separated to make a waves later. It's like a story. First we both store both row and bottom to make triangle. पहले हमने triangle बनाने के लिए सारे हमने सेव कर लिए, फिर अलग से we save rows vertex separate to make waves. Only top row vertex those will move up and down. Okay. फिर ये using loop to locate the width and height of the water, width and height of the water. Just practicing storing them. I understood. और फिर ये क्या था, लूप कि पहले रॉ में जाएगा, ये पहले रॉ में जाएगा टॉप रॉ, फिर उसके टॉप रॉ में वो here we locate a vertex even from left to right on rows and bottom side using
लूप मतलब लास्ट के लॉ से हमने यहाँ पे एक वर्टेक्सेस बनाया पूरे 70 और here we are doing the same thing located point for height और रॉ ऑन रॉ एंड बॉटम यहाँ पे और यहाँ के हाइट को बनाया जा रहा है ये चीज ओके और फिर हमने उस सेपरेट उस वर्टेक्सेस इवनली एंड वे हमने उस वर्टेक्सेस को इवनली सेपरेट कर लिया पोजीशन वाइज और यहाँ पे हमने अलग से वाई को सेपरेट किया तो वहाँ पे अलग से y के पॉइंट्स को ले लिया we made a separate list of just top vertices to move them later for waves here we made separate vertices and stored it for the make move for waves here we need wave just on top of the corner bottle we need waves just on top of the wall so we need to take that and ignore bottom row okay तो बेसिकली इसने क्या किया कि एक मैश बनाया जिसमें सारी चीजें स्टोर होंगी उस मैश में उसने टॉप एंड बॉटम टॉप ये ना कंफ्यूजन होता है कभी कभी बहुत टॉप एंड बॉटम के रॉ को उसने सेव कर लिया मतलब यहाँ का और यहाँ का सेव कर लिया 70 वर्टेक्सेस मतलब 140 वर्टेक्सेस और फिर उसने अलग से टॉप के वर्टेक्स को सेव किया मतलब 70 और उसने पहले रो में गया पहले रो का उसने पहले हाइट क्या था भाई वर्टेक्स भाई 1 2 यहाँ पे इतना तो ये यहाँ पे इवनली यहाँ पे क्या कहते हैं इवनली यहाँ पे किरीटा खोलते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं विजुअल पता नहीं मैं सही से सीख भी रही हूँ या नहीं कैसे लोग सीखते हैं वो भी नहीं पता मेरे को गाइडेंस नहीं है मतलब यहाँ पे वो इवनली स्प्रेड कर रहा है और फिर यहाँ पे हाइट बना रहा है ओके और फिर इसने अलग से यही वाला सेव कर लिया वाई को अलग से ये सेव करेगा और इवनली स्प्रेड हो गया ताकि इन फ्यूचर काम आ सके नाउ हियर वी आर कनेक्टिंग टू वर्टेक्स विजुअल एज ट्राइंगल अब यहाँ से वो विजुअली ट्राइंगल बनेगा ओके कितना कुछ समझना है भाई चलो ये एक समझ में आ गया तो ये सब तो समझ ही आएगा मतलब ज्यादा नहीं है ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया इंट ट्राइंगल एंड मुझे लगता है इसके लिए मुझे वो यूज करना चाहिए चैट जीपीटी यू नो ये भी बहुत अच्छे से समझाएगा डूड नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड how the code is working I will give you was I think after test future by myself what do you think makes me right copy paste get it working then understand let's try to work not the honest truthful copy paste feel like cheating get it working feel good progress understand line by line turn into your knowledge after step 3 you can make what yourself next time so let's do it give me one line of code every single day sentence why I am not getting
because I haven't read so many questions yet. You are free to speak with when you agree the truth and what I will tell you the truth. No, your logic is not weak. You build pair movement, jumping, moving poles, swimming, pendulum, spinning, spike. That's logic. That's working code. Then why aren't you getting the mesh code? Because mesh code is not logic. Mesh code is spatial geometry. Geometry somehow. The difference logic you have. Spatial geometry mesh need. If this, then that. Where is this point in 3D space? Loop array variable. How do 4 points make a square? How do 4 points make a square? Step by step rules. How do triangle connect? It's like you are good at cooking, following recipe. Mesh is like architecture, designing the building. Different skill. The truth, you are not getting mesh because you never practice spatial thinking, and that's fine. Most programmers don't. What you can do? Force math. Option force math until you try. Weeks, maybe get in, maybe quit. Practice practical thinking to the mental. Use simple water spray, then finish your game. My honest suggestion for your game: the water, then subjective practice. Drawing random people, plotting point XY, making simple mesh square and rectangle. Final particular foundation. How I build it. What is this? This and use is there any video on it? Correct question. The ability to visualize shape, position, movement in your head. हाँ, तो ability visualize इंग्लिश इतनी गंदी है कि you know एक तो मेरी इंग्लिश इतनी गंदी है कि क्या कहते हैं इंग्लिश इतनी गंदी है कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि बोल क्या रहा है ग्राइड तो बाद में समझ आ रहा है कि ग्रिड क्या होता है व्हाट इज प्रैक्टिकल थिंकिंग द एबिलिटी टू विजुअलाइज शेप पोजीशन मूवमेंट इन योर हेड आई कैन बस इंग्लिश की गंदी जैसे ना एग्जांपल इमेजिन हाउ अ स्क्वायर रोटेट इन योर माइंड आई कैन विजुअलाइज knowing where point is at x3 y5 without seeing it point is x3 5 without seeing it मैंने कर लिया विजुअलाइज डूड पिक्चर हाउ 4 पॉइंट्स कनेक्ट मेक अ स्क्वायर Five is without spatial thinking what is spatial thinking vertex 0 मतलब just a number that's the bottom left corner I know 0 1 okay triangle index is random those 3 points make a visible face code feels abstract code feel like a drawing how to build spatial notebook draw a grid on paper draw 4 dots across 3 dots down across from one side draw a grid on paper wait grid on paper draw a grid on paper
अच्छा तो ग्रिड है। ओह ठीक है समझ गई। ड्रॉ अ ग्रिड ऑन पेपर। ड्रॉ अ ग्रिड ऑन पेपर। ओके मैंने बना लिया। एक दो तीन, एक दो तीन बना लिया। ड्रॉ 4 डॉट अक्रॉस 3 डॉट डाउन। 3 डॉट क्यों? एक दो तीन चार। फिर कौन करेंगे? 3 डॉट डाउन मतलब 4 ऊपर हो गया, 4 डॉट अक्रॉस डाउन। 3 डॉट डाउन 4 डॉट अक्रॉस। अच्छा 4 ऊपर 3 बार 4 नीचे। 1 2 3। ओके आई डिड इट। 0 each label each dot with its next number. 0 2 कैसे होगा? 0 1 ये हो गया 0, सॉरी 0 हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 1 0 1 2 3 0 1 2 3। ये 2 कैसे हुआ? 2 अच्छा तो ये डाउन से शुरू हो रहा है तो ये हो गया 0 1 2 3। अच्छा फिर यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ से 0 शुरू हो रहा है तो ये हो गया आ जाएगा 0 1, फिर 0 2, फिर ये 0 1, नहीं 0 1 1 1 हो जाएगा। नहीं ये 0 0 1 2 3 ऊपर को 1 2 3 0 1 2 3 फिर 0 0 1 2 3 सही तो है। फिर 0 1 2 फिर 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 हो जाएगा 0 1 0 1 2 1 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 1 2 3 0 1 2। अच्छा ये ना पता नहीं क्या हो रहा है। Do this 5 times until it feels natural. Do this 5 times until it feels natural. अच्छा do it 5 times ओके। चलो जो बोल रहा है करते हैं। ये हो गया ओके हम फिर से करते हैं। एक ग्रेड बनाते हैं, एक ग्रेड बनाते हैं ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डॉट्स बनाए, डॉट अक्रॉस 3 डॉट्स डाउन तो 3 बार 3 क्रॉस में 1 3 1 2 3 बार तो बना दिया, 1 2 3 बना दिया 3 डॉट्स डाउन और फिर ये हो गया 0 0 1
2 और 3। फिर ये हो गया 1 2 है। अच्छा तो ईच रो अलग अलग है, ये 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 1 2 3 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 1 नहीं 0 1 2 2 ये हो गया 2 फिर 3 हो गया 3 1 2 3 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 3 हो गया 0 1 2 अरे 0 0 से शुरू हुआ ना 0 1 2 3 फिर 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 एंड फिर से गलत कर दिया मैंने, कैसे ऊपर वाला। चलो इसे क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम हो गया 0 1 2 3, दूसरा कॉलम 0 1 2 3, तीसरा कॉलम 0 1 2 3। और हमेशा नीचे से शुरू हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 0 शुरू हो रहा है यार। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं इसको। एक रॉ बनाते हैं, 1 2 3 यहाँ पे 4 डॉट्स ऊपर 3 डॉट्स डाउन, 1 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। मैं सोच रही थी ना कि 4 डॉट्स ऊपर नीचे 3 डॉट्स लूं, अब पता चल रहा है कि 4 डॉट्स कॉलम कॉलम को कहा जा रहा है, 3 डॉट्स और रॉ को कहा जा रहा है, मतलब 3 रॉ में 4 बार डॉट्स। ठीक है, फिर ये क्या हमेशा जो कॉलम है 1 2 3 से। ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके, फिर हमेशा जो रॉ लास्ट से 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। हाँ, सो बेसिकली मैंने कर लिया, लेकिन एक और बार करते हैं, मैं भूल ना जाऊं फिर से। हमेशा जो रॉ कॉलम से 0 1 2 3 शुरू होता है, फिर लास्ट से रॉ कॉलम, अरे यार कॉलम 0 कॉलम से 1 2 3 कॉलम 1 2 पहला वाला हमेशा 0 कॉलम से शुरू होता है 1 2 3 लास्ट, या जो दूसरा नंबर होता है वो शुरू होता है लास्ट से 0 1 2 0 1 2। एक दो तीन चार 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हमेशा जो कॉलम होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 0 1 2 3
0 1 2 3 और फिर लास्ट से हमेशा 0 शुरू होगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ओके इतना से समझ में आ गया एक्सरसाइज 1 column starter 0 1 2 0 नहीं 1 2 क्योंकि 0 शुरू हो रहा है ना तो 0 1 फिर 1 कितना है 0 1 फिर 1 अगर 3 कॉलम में तो 3 शुरू होगा 0 1 2 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 नहीं यहाँ पे 2 ही होगा 0 2 होगा क्योंकि लास्ट से शुरू हो रहा है ना 3 कॉलम 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 because we have 4 dots into 1 column axis and 3 times one column use 8 times you can use from 0 and the rows there are only bottom of it's on point connection. Only read current dot to make a triangle. Write on the 3 connect dot to make triangle. ट्रायंगल कैसे बनेगा यार 1 2 1 2 ये कैसे बनेगा ट्रायंगल स्क्वायर में बन जाएगा ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई ओ एक मिनट बॉटम लेफ्ट एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार बॉटम लेफ्ट 0 0 bottom left is not 0 0
अच्छा हाँ, 0 0, हाँ बॉटम लेफ्ट इज 0 0, सॉरी, यस बॉटम लेफ्ट इज 0 0। हमने 0 0 को ले लिया, 0 0, टॉप अ मिडल, 1 2, एक मिनट, 1 2, 0 1 2, इसको भी ले लिया, ओके। बॉटम राइट 2, 0 1 2 2 0, बॉटम राइट, बॉटम राइट, बॉटम राइट, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बॉटम का राइट 0 1 2 एक मिनट, 2, बॉटम का राइट, तो 2 हो गया, 0, बॉटम का राइट, कैसे 2 कैसे होगा बॉटम का राइट, 2 0 ही होगा, 0 1 2, 0 1 2 2, यार फिर से गड़बड़ी हो गई ना। ऊपर से हमेशा 1 2 3 4 3 शुरू होता है, कॉलम से हमेशा 0 1 2 से शुरू होता है, तो बॉटम, टॉप एंड बॉटम, टॉप हमेशा 1 2 3 से होता है और बॉटम हमेशा 0 1 0 से होता है, 0 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 0 0 1 2, बॉटम 2 0, 1 2, बॉटम का सिर्फ पॉइंट लेना था, मतलब अच्छा ओके, बॉटम, आई विल डिफाइन अ 3 3 3 ग्रेड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 ग्रेड, एक ग्रेड में 3 पॉइंट्स, ओके। फिर बॉटम लेफ्ट 0 0, मतलब 1 2 3 हमेशा, कॉलम 1 2 3, टॉप हमेशा 1 2 3 से शुरू होता है, बॉटम हमेशा 0 1 2 से शुरू होता है, 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 तो 0 0 मतलब टॉप, दूसरा वाला बॉटम, 0 0 मतलब बॉटम का लेफ्ट, 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0, हाँ ठीक है। लास्ट पॉइंट टॉप मिडल, टॉप मिडल मतलब 1 2, मतलब 0 1 और दूसरे का 2, 1 दूसरे का जाएगा, 1 2 3, ये हो गया। बॉटम राइट, बॉटम राइट 2 0, मतलब 2 पहला है, मतलब दूसरा 1 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0, ये हो गया, बन गया, ओके।
फिर टोल्स, जियो ज्योग्राफी वेबसाइट पर पॉइंट से जेंडर मेकअप place practical seriously game understand Baba is in best Minecraft building total space pin cross mono names YouTube video to watch such terms spectacle reasoning practice great coordinates for beginners coordinate for beginners understanding XY how to make machine apply spectacle thinking to code how to make mesh in Unity apply spectacle thinking to code specific video ये देख लेते हैं ना सीधा ये देखते हैं ना कॉपी ग्रिड बेस्ट ये so you don't have a logic for your relation and we can realize skills like a muscles one is now without looking at anything answer if you have 5 grid dot across 3 dot down if you have okay wait if you have 5 grid if you have a grid 5 dots 1 2 3 4 5 3 dots down 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 what is the index number of the dot at x2 x y 0 is if you struggle solve people today what is the index number of the dot at x2 x2 मतलब 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 then what the dot at by 1 x क्या होगा ना x 1 0 0 y 0 1 1 2 y पे तो होगा 1 2 मतलब टॉप x इसमें x क्या है ये तो y हो गया ओ वेट y मतलब रॉ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 रॉ हमारे पास ठीक है 1 2 3 4 5 5 मतलब ये बात कर रहा है रॉ की वेट आई गेट इट ठीक है ये समझ में आ गया और 1 2 3 तो हमारे पास 3 रॉ है जिसे हम x कहेंगे इसे y कहेंगे तो क्या इसने बोला है x2 मतलब 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 1 0 x 0 0 हर चीज तो 0 से ही शुरू हो रहा है तीनों लाइन तो पता कैसे करेंगे कौन सा x x2 is the index number of dot at x2 8 कौन सा 2 index number of dot at x2 what is the index number of dot at x2 y1 और y1 को भी कैसे पता चल करेंगे 0 1 2 3 0 1 2
ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। 0 1 2 0। अरे यार, एक्स एक्स 1 2 0। x2 कहाँ पे होगा? x2 y1 मतलब y1 तो चलो यहाँ पे मान लेते हैं y1 y। एक मिनट, एक बार देखते हैं वो। ये हो गया, वेट, ये कमजोर हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मतलब ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया 0 1 2 3 4, और यहाँ पे होगा 0 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो x तो ये हो गया, कौन सा x? 1 2। तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों थिंकिंग चाहिए मेरे को, ये झांसू मारू। कहाँ गया ये वाला अंडरस्टैंडिंग मैथ? फॉर्मूला इंडेक्स 5 डॉट अक्रॉस 1 5 2 7 y। अच्छा, ये अलग क्यों दिखा रहा है? ये तो कुछ और ही था। x 2 मतलब यहाँ पे 2 हो गया है, मुझे लग ही नहीं रहा था। वही तो मैं बोलूँ कि 3 है। मतलब मैं जिस तरह से कर रही थी, यहाँ पे मैंने लिखा था 0 1 2 3 4, फिर ऊपर 0 1 2 3 4, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये वाला तो मैंने सही किया था, 1 2 3 मतलब 1 2, और ये y 0 1 2, तो उसमें क्या बता, y 1 पे 0x, ये 1 2 3 4 0 1 2 x 2 मतलब 2 y 1 मतलब
7 मतलब x2 पे 7 है, इंडेक्स 7। What the fuck, dude? What the fuck? That is need to know. Yes, Jesus, China's. गाड़ फट के हाथ में आ गया मेरी। ये बहुत ही कूल डूड है, कुछ भी कहो, बहुत ही कूल आदमी है ये। नो रिजल्ट, हाउ टू मेक मैन। Oh, why we have to make triangle for this? Cut. Face wash, add audition. Oh, pimple. Cut. Little more drama. But why more drama? It's just a pimple. Clean and clear. It reduces pimples in 1 week and keeps the skin moisturized. Now with vitamin C and aloe vera. I think ये समझ लोगे तो चीजें मेरे लिए easy हो जाएंगे। Let's study how to make a mesh in Unity. In this video, we're going to see how we can make a mesh dynamically through code. This is extremely useful in many scenarios, like for making a custom animation system, like the one I use in my videos, or making a heat map or a radar chart. Let's begin. I hope your private life is amazing as a tutorial. Spend on an hour troubleshooting, but I did not have to survive. Hello and welcome, I'm your Code Monkey, and this channel is all about helping you learn how to make your own games with in-depth tutorials made by a professional indie game developer. So if you find the video helpful, consider subscribing. Okay, so let's first talk about how useful it is to be able to make dynamic meshes. Meshes are used to render everything, as you will soon see, and making meshes through code allows you to dynamically generate interesting shapes on the fly. We can modify the vertices and what part of the texture is rendered, which allows for very useful effects. One of the recent videos was covering a radar chart in the UI, and the shape for that radar is using a custom mesh. The environment heat map used in Battle Royale Tycoon, along with the floor tiles, are all based on dynamic meshes. Another example is simply the animation system that I use in my videos. Each unit is a single mesh that is dynamically composed of multiple quads that display certain parts of the texture. Also, the persistent particle system that I use for block particles is also mesh-based. Each particle is a single quad that moves its vertices until it comes to a complete stop. So this is just a sample of all the awesome stuff you can create once you know how to create custom dynamic meshes. So, in this video, we're going to learn how to create a mesh completely from scratch. We're going to see how something is rendered on screen, then we're going to learn to create the mesh object in code, learn what size each of the mesh elements need to be, draw a triangle, then apply a texture to it, and finally draw another triangle in order to create a square. With that, you will know everything you need to know in order to make your own custom meshes to create. मुझे मेन ही चीज नहीं पता कि मैश क्या होता है, डूड। बार बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। A mesh is a material such a wire. What is mesh? Whatever. What is a mesh unity in the 3D skeleton or shape. Mesh unity is the 3D skeleton or shape
of a game object. It defines the geometry of an object by arranging points in 3D space, which are limited from the surface without the making or existing an invisible point in the scene. In a geometric structure belonging to the scene, we are mesh layer, which physics define mesh. Mesh is composed of a list of 3D position vertices, corner, and triangles. Faces are coming to connect the corner. Ah! Allow touch for UV coordinate user UV avatar. Oh, UV coordinates are a 2D coordinate system using 3D modeling to map a 2D image texture into a 3D object. They are calculated points vertices on the map. 2D image turning the render software into its part of the image is part of the 3D model. UV in the concept 3D, UV does not stand for ultraviolet. It is not the acronym U and will be two axes of a tree. U represent the horizontal line. Horizontal line मतलब ये वाला point. Horizontal line X और V ये वाला point. V similar to X to Y. They are called U and V. Distinguish them from X, Y, and Z axis model. To is unfortunately objective taking card on box spreading to me. To label coloring UV and slide 0.0212 range UV coordinate are usually normalizing between 0 and 1. पहला stand for what X पहला always stand for X मतलब 1 2 1 0 0. Imagine how the basic condition called vertex qualified. Tell that Unity how to wrap a 2D image texture and on a 3D coordinate 2D image. Why a triangle not a square for texture shape? Why you can see a square in the game? It is almost always shape of two triangles underneath. Oh, the square one out there actually two triangles out there. We use triangle instead of squares, square or other polygons for a few critical reasons. Okay, I need to know this. Guaranteed planar surface. These points, हाँ plane surface आ जाता है. That's why we use triangle. अब sense बन रहा है 3 points. Triangle are ready to be on a perfect that flat 2D plane. No matter where they are placed in 3D space. If you pick 4 point a square, or move one, the surface can become bent, wrap, or non-planar, make it impossible to calculate how to fill it with texture properly. Okay. Yes, planar move one, the surface can become bent, wrapped, or non-planar, make it impossible to calculate how to fill the texture properly. GPY efficiency, GPU, geographic processing unit, are there to render triangle incredibly fast. Because GPU graphics
processing unit जो कि graphic are designed to render triangle incredibly fast because triangle are always planar. The hardware doesn't need to be complicated math to figure out how to fill them. Two triangles create a perfect, stable, and predictable squad. No ambiguity in filling. If you have a triangle, the graphic card knows exactly where to apply the texture. In this corner. 0, 1, 0, 1, and 2. If you have 4 points, the renderer might not know which two corners to connect first to spread the squad, leading to visual error. Polygon test. A triangle is the simplest possible polygon. It takes at least 3 points to define a 3D surface. 2 points are just a line, and 1, 2, 3, 2, 3. 1 is just a vertex. Measure the 3D geometry of object. Triangle are the fundamental building block used for efficiency. Just confirm कर रही हूँ. Graphic processing is specialized electronic circuit design. Here create video and video for display. Use excellent parallel processing. Perform many complex calculations simultaneously, which makes it vital game. चलो देखते समय. Then in the end, I will expand upon the code to make some examples of custom meshes in action, like a floor tile and a animation system. Okay, so now that we've seen just... मुझे इस इंसान का एक्सेंट समझने के लिए मुझे इसकी जब मैं सी शार्प सीख रही थी तो इसी के वीडियोस में मैंने सी शार्प सीखा था. तो इस बंदे का मैंने 1-2 वीडियो देखा, समझ में नहीं आया, फिर जैसे ही देखते गए इसका एक्सेंट मुझे समझ में आ गया. Useful it is being able to make a mesh through code. Let's talk about how something is actually rendered on screen. So here is my empty scene. There's nothing on it. Over here in the hierarchy, you can see that all I have is the UI and a simple camera. And the camera, as you can see, spatial thinking spatial is rendering completely in black. Now here I make a new game object, and again, still nothing is rendered. Now I add a mesh filter and a mesh renderer, and again, still nothing is visible. However, now I go in here and I set a mesh. Let's use the default quad. And now finally you can see something. Let's increase it. And now I drag a material onto it, and there you go, we can now view our texture. So these are the two core components that we need in order to render something on screen. We have a mesh and a mesh renderer. The mesh is what defines the shape that is rendered, and the material contains the texture data to be applied to that mesh. As you may know, computer graphics are made using polygons, so triangles, and over here I have chosen the default quad mesh, and in order to make a quad or a square, we need 2 polygons or 2 triangles. And if we go in here on our scene, we can select, here it is currently shaded, and we select wireframe instead. And you can see 2 triangles. Our quad is made up of 2 polygons, so here we have one, and down here we have another. So you put 2 of them together and we have a nice square, making a quad mesh. The sprite renderer works exactly the same way. So if we go in here, create a new sprite, there it is, the sprite render, drag the sprite. And here you can see the sprite render does exactly the same thing, also has a quad with 2 polygons. Alright, so now that we've seen how something is rendered on screen, let's see how we can dynamically create a mesh through code. So let's make a script to test our code. So in here, make a new C# script, let's call it our testing. Let's make a new game object, call it testing, and drag the script onto it. Okay. Now here in our script, let's first just go into our private void start and do a simple debug.log just to make sure that our script is running. Okay, let's see the console, and we have our console saying test. Okay, great. So our script is running correctly. Now in here, let's start by creating a mesh. So it's going to be an object of type mesh. Let's call it mesh, and we just do new mesh. Alright, there's our mesh object. However, like this, all we've done is create a mesh in memory. It doesn't really exist in our scene.
In order to show our mesh, like we saw, one of the things we need is a mesh filter. So here in our testing object, let's add a mesh filter. And now we can go back into our code, and here we get the component of type mesh filter as our mesh object. However, like this, all we've done is create a mesh in memory. It doesn't really exist in our scene. In order to show our mesh, like we saw, one of the things we need is a mesh filter. मेमोरी में एग्जिस्ट करता है मैश फिल्टर ऐड करने से वो एग्जिस्ट हो जाता है filter. And now we can go back into our code, and here we get the component of type mesh filter, and we set the mesh to be our newly created mesh. Okay, now let's test. Okay, here we are, and still nothing is visible. However, if we inspect in here on our mesh filter, we can see that there's something in there. And if we double click, we can now inspect the mesh, and we can see that it has 0 vertices and 0 triangles. So the mesh has no data, but we did manage to create and assign it. Okay, so far so good. Alright, now let's set up the vertices and triangles. Over here, back in our code, when we create the mesh, there are 3 fields that we need to set. mesh vertex which is an array of vector 3s. array of vector 3 represent each vertex of our mesh. Then we also need to set the UV, which is an array of 0 1 0 restore 0 0 UVs हो गया समझा लेंगे which is mesh vertex points हो गया ओके ये हो गया 0 0 0 ऊपर का और 0 0 फिर ये हो गया 1 1 और ये हो गया 0 0 an array of vector 3s. Vertices represent each vertex of our mesh. Then we also need to set the UV. यार फिर से मैं गलत कर रही हूँ 0 ऊपर का 0 0 नहीं होगा हमेशा लास्ट से शुरू होता है x में क्या होता है नहीं y में क्या होता है हमेशा 0 नीचे से शुरू होता है 0 और ऊपर 1 और x में क्या होता है 0 राइट से शुरू नहीं 0 लेफ्ट से शुरू होता है फिर राइट तक से काउंटिंग होता है लेफ्ट एंड राइट काउंटिंग अप डाउन एंड अप is an array of vector 2s, which define the part of the texture that matches with a certain vertex. And finally, we need to set the triangles, which is an array of vertices, which is an array of vector 3s. पहले हमेशा वर्टेक्स होता है इसे मैं सेव कर लेती हूँ बाद में काम आएगा ऐप डेवलपमेंट नहीं पहले vertex vertices represent each vertex of our mesh. Then we also need to set the UV, जैसे वो UV सेट कर रहा था triangle vector 2s, which define the part of the texture that matches with a certain vertex. And finally, we need to set the triangles, which is an array of ints, which define the vertex index, and 3 of them make up a polygon. Okay, so let's set them all up. First, let's make some local arrays. We're going to set them up, and only in the end do we assign it to our mesh. So we need an array of vector 3s for our vertices. Then we need an array of vector 2s for our UV. UVs vector 2 UVs के लिए क्यों vertex का तो यही लेगा And finally, we need an array of ints for our triangles. Alright, so we do it, we set them all up, and finally we upload them to the mesh. Alright, so far so good. Now, as you can see... Alright, so we do it, we set them all up, and finally we upload them to the mesh. Alright, so far so good. Now, as you can see, we need to define a size for our arrays. So let's start off with the simplest thing we can render, which is a single polygon. In order to create a triangle polygon, we need 3 points. So in here, we're going to have 3 vertices. Then the 3 vertices is always the same size as the vertices, so we also have 3. And finally, the triangles contains the indexes of each vertex that makes up a triangle. Indexes. And the triangle is made up of 3 points, so in here, again, we're also going to have 3.
Alright, so just like this, let's test ना and अच्छे से inspect our एक्सप्लेन किया mesh. है इसे. Okay, so here we are. We still can't see anything, but let's inspect our mesh. And there it is. Our mesh now has some data. It has 3 vertices, it has UV, and 1 triangle, 1 polygon triangle. Alright, great. Back in the code. And here, let's define our vertices. So, vertices मतलब 3 vertices है. Okay, I got it. उसने यहाँ पे क्या किया है? कहाँ किया इसने vertices? Corner vertex. Oh, get it. Yes. so we're going to have 3 vertices. For vertex 0, let's put it on new vector 3 on 0, 0. 0 0 मतलब नीचे से. Then for the 1, let's put it Down फिर ऊपर 0 1 right जाएगा. above, so on 0, 100. 100. And finally for the मैं 100 की चीज third से. vertex, 100 मतलब बीच में इतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे. Okay, got it. let's 0 1 put it 100 up हो and to गया. the right. So we're going to set it to 1 100, 100. अच्छा तो यहाँ से 0 इतने बीच में इतने ज़्यादा 0 पॉइंट्स होंगे 100 और यहाँ से 1 शुरू होगा यहाँ से लेकर 100 तक होंगे. 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 यहाँ पे 100 0 1 0 1 फिर लेना क्या है. Alright, these are our 3 vertices. Now for the UV, let's ignore it for now. ये भी इस vertices ने define कर दिया. And finally for the triangles, UV ही तो था vertex. this is an array of ints which contains the index of the vertices that make up a polygon. So let's start our triangle on for the triangles. This is an array of ints which contains the index of the vertices that make up a polygon. So let's start our triangle on vertex 0. Then we connect vertex 0 into the vertex on index 1. हमसे last से शुरू Finally, we होता है. connect it into the index 2. And that's it. Now, one thing that is very important in here is the order of the indexes. Each polygon has a face and a back face, and some shaders won't call the back face. What defines the front and back of the polygon is the order of the indexes. In order to see the front face, always set the indexes in a clockwise order. So here you can see that our triangle is going from the origin, going up, and then up and to the right. Each polygon has a face and a back face, and some shaders won't call the back face. What defines the front and back of the polygon is the order of the indexes. In order to see the हमेशा 0 से शुरू होता है. इवन हम इंडेक्स में दे सकते हैं x 0 से शुरू हो रहा है, y भी 0 से शुरू हो रहा है, जो हमेशा यहाँ पे इस साइड होता है. तो understood. तभी हम लोग oh that's the reason why we take from the down side, bottom side, because it's always start from the 0. Okay, gotcha. the front face, always set the indexes in a clockwise order. So here you can see that our triangle is going from the origin, then going up, and then up and to the right. If we swapped it and did up to the right to the up to the down,
then we would have set our triangle counterclockwise, which would swap the front and back. So always keep that in mind, and in most cases just set it to clockwise. Alright, so now that we've set everything up, let's test. Okay, here we are, and we still can't see anything. Let's inspect the mesh, and there you go, everything is correct. 3 vertices, triangles, and the UV. And the reason we can't see anything is, like we've seen previously, we need a mesh filter for the mesh, and then we need a mesh renderer. And yep, we can finally see our nice polygon. Awesome! If we inspect the scene and again put it on wireframe, we can see our nice polygon connecting. There's a vertex here, one here, and the triangle connecting all of them. Now our polygon is currently not displaying a texture because we did not set the UV. So let's do that. So we're going to set up the UV array. Now in here, the UV array always has the same size as the vertex array. So we have 3 vertices and 3 UV. Each UV index contains the texture position that should be matched to the vertex in that exact same index. Over here on the project files, I have this texture. As you can see, it has a bunch of different colors, so we can easily see what part of our texture is being shown. Now we want to apply this texture to our polygon. In here, the UVs are vector 2s, and they are normalized vector 2s. That means that the lower left corner of the texture is on point 0, 0, and the upper right point is on 1, 1. So we created our polygon with 3 vertices, one on the bottom, then one above, and one to the right. The left corner of the texture is on point 0, 0, and the upper right point, this texture. As you can see, it has a bunch of different colors, so we can easily see what part of our texture is being shown. Now we want to apply this texture to our polygon. In here, the UVs are vector 2s, and they are normalized vector 2s. That means that the lower left corner of the texture is on point X, Y को UV. and the upper right point is on 1, 1. So we created our polygon with 3 vertices, one on the bottom, then one above, and one to the right. So in order to display this texture, just like the polygon shape, we're going to set the vertex on index 0 into 0, 0, so that it displays the lower left corner. Then on the index 1, we want to show the upper left part of the texture. So we're going to keep the X at 0 and the Y at 1. And finally on the 2, we want to show the upper right, so we set it into 1, 1. Alright, that should do it. So यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने वर्टेक्स मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर यूवीज में उसने वर्टेक्स को उसको दिखा दिया कि कितने पॉइंट किससे ऐड करना है, और यहाँ पे वर्टेक्सेस में उसने बता दिया कि कितने बीच में पॉइंट्स होंगे. We assigned our vertices, our UVs, and our triangles. So our mesh has complete information. Let's test. So here we are, and we still see the same pink texture. The reason is because we need to assign our material. So down here we have our texture. Let's make a material to apply to it. So a new material, call it the same thing. And here, in this case, let's use a very simple shader, so just unlit texture, and we drag our rainbow texture. Okay. Now back in our testing object, we just drag the material. And there it is. And as you can see, the texture perfectly matches with the corners we select. So down here, the light blue, exactly matching that one. Then up here, the green, yep, and the red, yep. And the rest of the texture is not visible since we did not set the UV to use it. Awesome. So a triangle is a great shape, but a lot of the times a square shape is more helpful. So let's see how we can expand our mesh in order to make a quad. Now here in our code, we set up our triangle, which has 3 vertices, 3 UVs, and 3 triangles. Now in order to make a quad, essentially what we need is just another triangle. We put 2 triangles together and we have a nice square. So let's think about what we need. In order to make a square, we need 4 points, so in here we need 4 vertices. Then UVs are the exact same number as the vertices, so again, also 4. And now for the triangles. Over here we have 3 triangles. 3 triangle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 triangles. For each polygon. Now in order to make our square, we need 2 polygons. 6. So that means we need to have 3 times 2 triangles, which is 6. And that's it. That's the size of our arrays. Now here we are setting up our values. So you have 0, 0, 0, 100, 100, 0. And now that to make a quad, what we need is the one that is right and down. So let's set the vertex on index 3 to be on 100 and 0. Now on the UV, let's 100 and 0 मतलब 1 होगा.
0 कैसे हुआ? हाँ 100 से 0 यहाँ पे आया ना 0, तो यहाँ पे 0 आया। इसी को छोड़ दिया इसने। Show the entire texture. So for the UV3, let's put it on 1, 0. And now in here for the triangles, the first polygon stays the same, so we'll leave the first 3 indexes. And now for the next 3, again, remember to set them clockwise. So for the second polygon, we're going to go from vertex 0, then go into vertex 2, which is up and to the right, and finally go into vertex 3, which is to the right and down. And that's it. We have our quad nicely set up. So we have 4 vertices, 4 UVs, and 6 triangles. Alright, let's test. And yep, there it is. We have our quad being displayed as a perfect square showing the entirety of our texture. So we have essentially recreated the underlying code for the sprite render. If we inspect our scene, we can see that indeed we have our 2 polygons. So we can see shaded wireframe and see exactly like that. We have 2 triangles connected in order to make a nice quad. So now you know how to create a mesh and set up the vertices, UVs, and triangles to take any shape you want. Every other effect you want to make is just an expansion of this code by adding more vertices and different triangles. For example, let's make some tiles. वो सेम ही काम किया है। Alright, so here's the code to make some tiles. Now I plan on doing a dedicated video on how to make a grid map and visualize it. But for now I just wanted to quickly demonstrate Alright, so here's the code to make some tiles. Now I plan on doing a dedicated video on how to make a grid map and visualize it. But for now I just wanted to quickly demonstrate the various uses for the dynamic mesh. So in here you can see that I have a certain width and certain height. Let's put this bigger, let's put it 4x4, and a certain tile size. Then the vertices, I calculate them by 4, since again we have 4 per quad, so 4 vertices, 4 and 6. Let's put this bigger, let's put it 4x4, and a certain tile size. Then the vertices, I calculate them by 4, since again we have 4 per quad, so 4 vertices, 4 and 6. Multiply them by the total size of the grid. Then I cycle through the width, cycle through the height, and set the quad data for that specific quad. So do all of this, and then the result. And here it is, we have our result, our nice tile grid. So again, the way that it works, essentially each of these is a nice quad. So we can go back into the scene, and here inspect, and you can see that each of them is indeed one quad. So this is just an expansion of what we were doing previously. So instead of having this texture, you would add a floor tile texture, and you can see how you could have a nice floor tile system, just like the one that is used in Battle Royale Tycoon. Now for another example, let's make a simple animation. Alright, so here is a animation that functions exactly like the custom animation system that I use in my videos. So as you can see, the head is bouncing up and down, there's a body behind it. And if we go and inspect again our wireframe, there it is, you can see the quad for the body and the quad for the head. So put it on shaded, and yep, there you go. You can easily see 2 quads and one of them is moving. And down here I have the texture. And as you can see, it is a simple sprite sheet texture with the shaded, and yep, there you go. Up and down, there's a body behind it. And if we go and inspect again our wireframe, there it is, you can see the quad for the body and the quad for the head. So put it on shaded, and yep, there you go. You can easily see 2 quads and one of them is moving.
And down here I have the texture. And as you can see, it is a simple sprite sheet texture with the various body parts cleanly separated. Now here in the code, as you can see, it is all based on quads. So we have 2 quads, then we have a quad to render our body, exactly the same way that we created our previous quads, and another one for the head. When the main difference अब रिवॉर्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को. Again, the UV is a normalized value, so we need to take the texture width and height in pixels, take the position in pixels, and then we simply divide them in order to get our normalized values. So we do that in order to just show the body texture on this first quad, and down here we show just the head texture. And then down here, I'm using the CodeMonkey utilities to create the function on update, so this code runs on every update, and it's just a simple moving up and down code. So as you can see, I just take the head position, I move the Y up and down, then I modify the vertices array based on the new head position, and I upload them back into the mesh. Remember that in order to modify a mesh, first you need to modify a local array, and in the end you need to apply it to the mesh. So सब कुछ करने के बाद मैश में अपलोड करना है, तभी इसने यहाँ पे अपलोड किया था. नहीं देखो, तभी इसने यहाँ पे मैश पे अपलोड किया था. कहाँ गया मैश? ये देखो, मैश फिल्टर डॉट मैश, इसमें मैश में इसने अपलोड कर दिया ये सब. नाउ आई एम गेटिंग इट. सो ट्रायंगल, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ हो गया. वर्टेक्सेस y0, मतलब लास्ट को लेगा, लास्ट को लेने के बाद लास्ट होगा, फिर इसमें इंट बॉटम लेफ्ट में बॉटम लेफ्ट then 69 the 0 69 फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे को जोड़ रहा है. काम करूंगी, कल इन सब चीजों को मैं छापूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे लिए. I think but I think I can go by first making simple, then hard one. Like after making all, I can make less water in the. This is the smartest. This is the going way today. Wow, make complex water now. Make simple water now. Get stuck for a week. Finish your game. Get frustrated. Feel productive. Make it quiet. Keep going. Your plan. So, step simple water sprite scene. Wave damage today. Finish your game this week. Yes. Practice practical thinking separately 10 minutes a day.
Come back to mesh water. We practice critical thinking separately. Come back to mesh water next week. Simple water. Water green sprite. Box very pretty sprite. वो एक्स मुझे मैसेज लाइक मैं सिंपल तो बना ही सकती हूँ. अब इस चीज को डिलीट करते हैं. इस चीज को मैं डिलीट करती हूँ. डिलीट नहीं करूंगी, इसे मैं कर देती हूँ कॉपी. कल से मैं कुछ अलग बनाऊंगी. इसमें सिंपल सा बनाती हूँ क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं है और इसमें बाद में काम आएगा. मैं स्टक नहीं रहना चाहती. मैं सिंपल वाला बनाऊंगी. सिंपल बनाने के बाद एकदम लास्ट में सबको कॉपी चेपेंगे ना लाइक यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ना. ओके, यहाँ से कल मैं सिंपल वाटर बनाऊंगी एकदम सिंपल वाला. By the way, I learned something this simple learn math when vertices define triangle when apply simple waves and exactly right. You understand the sequence perfectly. Vertex, triangle, UVs, waves. Understand correct. Step, what is that? Vertices. Place point grid. Triangle. Connect point to become visible. UVs. Tell material how to stretch one mesh. Waves. Move drop. Tomorrow plan no article. Open your working water script. Platform stretch. Change one number, speed, height, vertex. Change everything. See what happened. No, don't write this question. Wait. No, that is so complex. Direct to the from scratch. That mess is so hard. Like, stare at a blank screen. So tomorrow one square vertex triangle. Use a square at height rows, rectangle, and top vertices. Vertices are points, triangle connect points and platform vertices.
मैं ट्राई करते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन मैं सीख रही हूँ, कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है मेरे को। सो अब कल करते हैं। कल मैं सिंपल वाटर बनाऊंगी, खुद से ट्राई करूंगी। उसके कल नहीं बना तो मैं सिर्फ छापूंगी, कल नहीं बना तो मैं छापूंगी, एटलीस्ट वर्किंग हो जाए। धीरे धीरे करते हैं ना, क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने की। आई कैन गिव जस्ट 1 hour डेली लाइक इन प्रैक्टिस, बट पता नहीं क्यों परफेक्शनिज्म का कीड़ा जो है ना मेरे गाय में क्यों हो रहा है, नहीं परफेक्ट नहीं करना है। मैं कल खुद को समझाऊंगी। कल मैं 3 hours का लाइव करूंगी, 2 घंटे हो जाएंगे किसमें, करेक्टर को मूव ये सब कराने में और वाटर करवाने में। पता नहीं, मुझे एक वीडियो बनानी है, उस वीडियो के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही दिन में सब हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। I need to be patient. I have to be so patient. I have to be so much patient. हो ही जाएगा कुछ दिन में, 3-4 दिन में तो बन ही जाएगा पेशेंट, अगर डेली में 1 घंटे देती हूँ। पर सिंपल वाटर भी बन जाए, बाद में सब कुछ बन जाएगा तो उस वाटर को मैं मॉडिफाई करूंगी, अपडेट कर दूंगी, एडवांस पे मूव करेंगे। सबसे पहले छोटा सा तो आ जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे क्या मूव करूँ मैं, कॉम्प्लेक्स पे नहीं मूव करूंगी। मुझे समझ में आ गया है कौन सा कैसे करना है। एक बार फिर से वो वीडियो देखूंगी, फिर यूवी मैश वाला देखूंगी, कल ही देखूंगी, और फिर कल से ही शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं कल प्लेयर को मूव करवाऊंगी ताकि मुझे प्रोडक्टिव फील हो, एटलीस्ट आई वांट टू फील प्रोडक्टिव। तो पहले कल मैं प्लेयर को ऐड करूंगी, मूव करवाऊंगी, उसके बाद हम उसमें जाएंगे, वाटर सीखेंगे। कल मेरा 2 काम है, वाटर एंड प्लेयर को मूव करवाना। उसके बाद वाटर पे डेली 1 घंटा बस देना है, दैट्स इट। उसके बाद बन जाएगा वीडियो, मैं बाद में अपलोड करूंगी सब एडिट करके। आई हैव टू बी पेशेंट। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव। मैं जा रही हूँ कोचिंग। बाय बाय।